So today we are going to talk about self-esteem. See, when we are talking about confidence, we do talk about self-esteem as well, right? Self-esteem is the first step you take towards the self-confidence. So self-esteem is, you can say, the paving block, your first paving block towards the self-confidence. So let's see what is self-esteem, how it is built up, how it really helps, and what if you don't have a self-esteem, right? So I'm here with you for the next 1 hour. So when I'm talking about self-esteem, how do you feel about you is the thing. आप अपने खुद के बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं? अगर मैं इसमें एक सेंटेंस में कहना चाहूँ कि सेल्फ एस्टीम क्या है, व्हाट इज सेल्फ एस्टीम? इट इज हाउ डू यू फील अबाउट योर सेल्फ. दैट इज सेल्फ एस्टीम. So let's begin our journey towards self-esteem. So here I am, see the slide. Your perception of yourself has enormous impact on how others perceive you. आप खुद अपने बारे में, खुद के बारे में क्या सोचते हैं? Your perception of yourself has enormous effect on how others perceive you. Definitely, so always believe in yourself. So what is a self-esteem? It is a concept to convey a positive regard you have for yourself. Definitely something positive about you to yourself, not to others. हम किसी दूसरे को नहीं बताने जा रहे हैं कि what is positive, what is good in me. First, we need to be convinced that yes, this is something very positive in me. So it is a concept which is used to convey a positive regard you have for yourself, right? And it is based on your judgment of your own worth and importance. You are judging yourself. No one else is going to judge you. You have not given any rights to anyone to judge you. So you are the one who is going to judge yourself, and that is self-esteem, and how much you feel other people value you. तुम्हारे सोचने से, तुम्हारे हिसाब से आप क्या फील करते हैं कि आपके आजू बाजू जो लोग हैं, maybe your teachers, your professors, your family members, your friends, or the people around you, your neighbors, how do they value you? That is again a component of self-esteem. Why it is important and how does it really affect us? Self-esteem is very important, no doubt about it. It affects your mental health. सबसे पहली बात, how you behave, it do affect the way you behave, and it is definitely seen into your actions, into your behavior. It is reflected through your decisions as well, the decisions which you take for yourself. Your friendship, yes, it can affect the friendship of yours and your success. If you do have a very good high self-esteem, definitely you will progress. And lastly, taking all the things together, it definitely affects your life. So see how important the self-esteem is. Now what influences the self-esteem? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो influence करती है self-esteem को? Or which we should understand, we should know what exactly is influencing the self-esteem. So the first one is the physical change and development with age. हम सब एक जैसे नहीं होते, हम सब mentally, physically एक जैसे develop नहीं करते. कुछ surroundings हमारे ऐसे होते हैं जो definitely influence करते हैं. So not everyone grows at the same age and at the same time. In some families, some of the individuals, some members are too much pampered. So they may take a little more time to understand what self-esteem is. In some families, the background is different and that particular individual grows up early. He or she understands the responsibilities and everything. So I want to say one thing, that every one of us is unique. And it is not that कि मुझे आज समझ रहा है सेल्फ एस्टीम क्या है तो मेरे एज में जो हैं उन्हें भी उसी समय समझा होगा कि सेल्फ एस्टीम क्या है. नो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंसेस, द बैकग्राउंड एंड डेफिनेटली द डेवलपमेंट you have. And second is the media image. This is something which is really influencing all of us all the time, thanks to the social media, thanks to
all these technologies. And one thing I want to tell you, that you should avoid comparison with celebrities. They are celebrities. We are the common people, right? And there is, you can say there is no comparison between the media image of that particular celebrity and the way you are living your life. So stop comparing yourself with or your life with the lives of those celebrities. So the media image definitely influences all of us, and we should be on our guard so that that really does not affect us or influence us to a great extent. I'm not saying that it should not always influence us for the good. Yes, it should, but definitely there has to be a limit. Your family and friends, sometimes they are too concerned about how you look, how you dress, and they do criticize us. And this is something which we all have experienced one time or another in our life. So family and friends, media images, the physical changes, developments with age. These are few things that influences the self-esteem. Now just take a minute. I'm requesting every one of you. Just take a minute. Think about a positive experience in your life. जल्दी से सोचो कि is there any positive experience in your life? अभी तक के आपका जो भी एज है बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे, पर ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जो डेफिनेटली gives you a very positive vibe, or just think about it and you will really feel good कि yes, this is something where I was so positive, the surrounding was positive, the results were positive, and if you have at least one single experience like that, celebrate yourself like a celebrity. You are a celebrity. Celebrate your strengths and successes. Now just count on, look at your screen. So many things you do have. मेरे पास कुछ टैलेंट्स हैं, आपके पास और भी उससे भी ज़्यादा और वैरिड टैलेंट्स हैं. आपके स्ट्रेंथ्स अलग, आपके फ्रेंड्स के स्ट्रेंथ्स और टैलेंट्स अलग, मेरे अलग. बिकॉज वी ऑल आर इंडिविजुअल, वी आर सो यूनिक, राइट? सो माई स्ट्रेंथ्स, पैशन, टैलेंट्स, accomplishments and positive attributes. This is something you should celebrate every day. इसके लिए ज़रूरी क्या है, पहले हम इन्हें पहचानें कि yes, I am so talented in this. I do have these particular strengths. Identification बहुत ज़रूरी है. Passion, I love what? I love drawing, painting, talking, teaching, writing, driving, whatever. Something that you have in you as a passion. Your accomplishments till date, you should be proud of that. That's you who have done that. And positive attributes. So acknowledge each part of yourself and show gratitude for all that you have become. आज तक के, right from the being a child, toddler, till here, into your graduation or post-graduation, whatever you have done, that is your accomplishments. You have made your families proud of yourself, proud of you, and you also should be proud of what you have achieved. So, celebrate your success. High self-esteem. When we are talking about high self-esteem, so what is a high self-esteem? So, people with high self-esteem, what they do or what they are like. कैसे होते हैं वो लोग? See on your screen. Like to meet new people. The people who are definitely high on self-esteem do always like to meet new people. नए लोगों से मिलना वो पसंद करते हैं, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं. ये एक जनरल आइडिया दे रही हूँ मैं. जस्ट आप अपने आप को स्कैन करते जाओ इसके साथ. They don't worry about how others will judge them. वो कभी इस बात के लिए वरी नहीं करते हैं कि आगे वाला उन्हें कैसे जज कर रहा है. दे आर वेरी कंफर्टेबल इन देयर जोन. दे आर वेरी कंफर्टेबल विद देयर बॉडी, विद द वे दे ड्रेस अप एंड हाउ दे प्रेजेंट देमसेल्फ. हैव द करेज टू एक्सप्रेस देमसेल्फ. थर्ड, दे डू हैव द करेज टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. खुद को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं. दे आर एनरिच्ड विद each new encounter in life.
कुछ भी हो ज़िंदगी में, उनके जीवन में, उनकी लाइफ में, अच्छे एक्सपीरियंसेस हो या बुरे एक्सपीरियंसेस हो, दे ट्राई टू एनरिच देयर लाइफ विद दोज एक्सपीरियंसेस. कुछ ना कुछ सीखते हैं उससे. सो दे आर एनरिच्ड विथ ईच न्यू एनकाउंटर्स इन देयर लाइफ. आर यू लाइक दैट? दे आर नाइसर टू बी अराउंड. जब वो वहाँ होते हैं तो आजू बाजू लोगों को बहुत अच्छा लगता है. दे आर हैप्पी. यस, दिस इज अ पर्सन, दैट पर्सन इज सो नाइस टू बी अराउंड. दैट पर्सन इज नॉट जेलस. दैट पर्सन इज नेवर जजिंग एनीवन, and it's so nice talking to that person. So are you that type of person? Ideas are met with interest because others want to hear what they have to say. They do have so many good ideas along with the interest, and they definitely want to convey these ideas with the other people, and are magnets to positive opportunities. They are always ready to say yes to opportunities. They do have a very positive attitude. So if I talk about attitude, it is like I think I can attitude. I think I can attitude. Now these are the few signs that you have low self-esteem. We have just talked about the high self-esteem. Just look at the screen. This is giving you signs that if you have low self-esteem, you trust yourself. When you look at the mirror, you don't feel good. I'm not good. I'm not good looking. I don't trust myself. So you lack self-trust. Second, you constantly compare yourself to others. If you are low at self-esteem, you constantly keep on comparing yourself with others. अरे उसके पास ये है, उसके पास ये है, वो ऐसा है, वो वैसी है, मेरे साथ मैं तो उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हूँ. Because you have never reflected on yourself. तुमने कभी अपनी खुद की वैल्यू ही नहीं की है. Just think what good things you have. What are your strengths? You do have talents. Each and every individual do have some talents. It's very, very, very important to identify those talents. Then you engage in people pleasing behavior. क्या होता है जिनका भी सेल्फ एस्टीम लो होता है ना, दे ट्राई टू प्लीज द पीपल एवरी टाइम. हाँ जी नहीं जी वाला जो एटीट्यूड हम कहते हैं, दे ऑलवेज एंगेज इन पीपल प्लीजिंग बिहेवियर विच इज़ नॉट गुड इनफ. देन they are not good in expressing themselves. They cannot, and they believe what others are saying about that, what others are telling about that. I thought you were okay with it. जैसे मैंने ऊपर कहा, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं लास्ट वाला जो एक पिक्चर है, आगे वाला उससे बोल रहा है कि मुझे लगा कि ठीक है तुम्हारे साथ तो चलता है. So you are okay with it, but you are not complaining. You are not expressing yourself. So these are few signs of self-esteem. So people with low self-esteem don't believe in themselves, see themselves failing before they even try. अभी तो शुरुआत ही नहीं की है, अभी ट्राई करा ही नहीं है और पहले से हम अपनी हार मान लेते हैं. ऐसे लोगों के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम होती है, and they are low on their self-esteem. So I just hope, I just believe that you are not among them, right? Have a hard time forgiving their mistakes and make themselves pay the price forever. अपनी अगर कुछ गलतियां की हैं उन्होंने, तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं करना चाहते या करते नहीं हैं, और वो जो बोझ है एक गलतियों का, वो हमेशा ऑन द बैक ऑफ द माइंड उनके इस पे रहते हैं, और वो हमेशा उस बोझ के साथ आगे बढ़ते रहते हैं. दे नेवर एवर फॉरगिव देमसेल्फ फॉर एनी ऑफ द मिस्टेक्स. हो सकता है वो मिस्टेक्स उनकी भी हों या किसी और की भी हों, पर वो खुद को उसका दोष देते रहते हैं हमेशा. सो दैट इज़ अगेन अ साइन ऑफ लो सेल्फ एस्टीम. बिलीव दे कैन नेवर बी एज गुड एज दे शुड बी और एज गुड एज अदर्स. जो मैंने बोला, दे ऑलवेज कंपेयर देमसेल्फ विथ अदर्स. हमेशा कंपेयर करेंगे, हमेशा बोलेंगे नहीं मैं उसके जैसा नहीं हो सकता, मैं उसके जैसी नहीं हो सकती. सो अगेन लो सेल्फ एस्टीम.
They are afraid to show their creativity because they will be maybe bullied or ridiculed. They never try to show up their creativity, their talent. आगे पूरे सामने आगे दुनिया को दिखाना ही नहीं चाहते बिकॉज दे आर अफ्रेड कि शायद मुझे नेगेटिव इसमें मार्क्स मिलेंगे या मेरी हंसी उड़ाई जाएगी या मुझे किसी को ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो उनमें कॉन्फिडेंस से नहीं है. एंड वंस यू आर हाई ऑन द सेल्फ एस्टीम, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस डू कम. दे आर डिससैटिस्फाइड विद देयर लाइफ, हमेशा ज़िंदगी से परेशान होते हैं. स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम अलोन, दे रियली ट्राई टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम अलोन. आगे आजू बाजू उन्हें कोई नहीं चाहिए होता है, खुद की कंपनी खुद के साथ ही उन्हें मजा आता है. कंप्लेन एंड क्रिटिसाइज, ये बहुत ही बेसिक क्वालिटी होती है जो इंडिविजुअल्स का सेल्फ एस्टीम लो होता है. दे ऑलवेज कीप ऑन कंप्लेनिंग, दे ऑलवेज कीप ऑन क्रिटिसाइजिंग मे बी द सिचुएशन, द सर्कमस्टांसेस और देमसेल्फ. हमेशा खुद को कंप्लेन करेंगे, खुद की क्रिटिसिज्म करेंगे या आजू बाजू जो भी एक सराउंडिंग है उसको भला बुरा कहते रहेंगे, पर खुद को तराशने का काम नहीं करेंगे. दे वरी अबाउट एवरीथिंग एंड डू नथिंग, चिंता तो बहुत करेंगे सब पर करते कुछ नहीं है, एक्शन कुछ नहीं लेंगे. सो दे हैव एन आई कैंट डू इट एटीट्यूड, आई कांट डू इट एटीट्यूड. इनका जो एटीट्यूड होता है वो ऐसा होता है, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी आई कैन नॉट डू एनीथिंग, हाउ कैन आई डू, मैं तो कुछ नहीं कर सकता इस सिचुएशन में. सो दिस इज लो सेल्फ एस्टीम. दे डोंट टेक अ स्टेप फॉरवर्ड आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन. सम कॉमन साइंस ऑफ लो सेल्फ एस्टीम, देखो एग्जैगरेटेड ब्रैगिंग, हमेशा इसकी बुराई उसकी बुराई या किसी भी सिचुएशन को नैगिंग करते रहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था. बट व्हाट यू एग्जैक्टली आर डूइंग टू चेंज द सिचुएशन, नथिंग. सो एग्जैगरेशन एवरी टाइम, छोटी छोटी बातों को पहाड़ बना देना. रीस्टोरिंग टू न्यूमरस अटेंशन गेटिंग बिहेवियर, उनका जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा अगर हम साइकोलॉजी को इसमें लेके आए तो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हो जाता है. ओवरली सिली थिंग्स करेंगे, ओवरली यू कैन से ऑलवेज कंप्लेन करते रहेंगे. वर्बल फिजिकल एग्जैगरेशन आप उनके बिहेवियर में देखेंगे. सो दीज आर फ्यू साइंस ऑफ लो सेल्फ एस्टीम. मैं ये जानबूझ के आपको बता रही हूँ कि इफ़ यू डू हैव एनी ऑफ दीज, ट्राई to get it out of your life. Try to get it out of your personality. Just throw it out. Very reactive to the ups and downs of daily life. छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, कभी कुछ छोटा सा झगड़ा हो गया फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, हो सकता है कि टीचर ने कुछ कह दिया, प्रोफेसर ने आपको डांट दिया, आपके असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं. तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों से दे गेट डिवास्टेटेड, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग जाता है उन्हें. और मतलब इतना कि बस अब इसके आगे तो जहाँ है ही नहीं, बस हमारी लाइफ यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है एंड हम अपने आप को फेलियर समझने लगते हैं. अगर आप में इस तरीके का सेल्फ एस्टीम है, लो सेल्फ एस्टीम. बीइंग सेल्फ क्रिटिकल एंड ऑलवेज अपोलोजाइजिंग, हमेशा खुद की ही बुराइयाँ निकालते रहना, हमेशा और हमेशा दूसरों को इतना अपोलोजाइज करना, इतना सॉरी बोलना, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, आई एम सॉरी फॉर दिस, आई डेंट मीन दिस, आई डेंट मीन दैट. They have this particular type of behavior which brings their self-esteem down low automatically. If you don't have any, आपने कोई गलती नहीं की है, आपका उस बात से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आप खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, खुद को दोषी ठहरा रहे हैं और बार बार लोगों से माफ़ी भी मांग रहे हैं उस बात के लिए. So you are bringing your self-esteem down yourself. Never do that. Reluctant to learn new things or avoiding a challenge. The people with low self-esteem, definitely they never ever try to take the challenges. They never learn new things. उन्हें नई चीज़ें accept करने में भी बहुत time लगता है. They are being unable to make the choices or solve the problems. कुछ choice करना है, choose करना है,
प्रॉब्लम सॉल्व करना है. प्रॉब्लम मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपके स्टडी रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ है रिलेशंस को लेके कुछ है. दे आर नेवर एवर एबल टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स and they never make a good choice, or they hesitate, or rather they are unable to make the choices. Always blaming, जैसे मैंने कहा, हमेशा दूसरों को दोष देंगे या खुद को ही इतना दोष देंगे कि ऑटोमेटिकली लोगों को लगने लगेगा कि यस इसकी ही गलती है. Easily influenced by peers, उनके सराउंडिंग में जितने लोग होते हैं उनका इन्फ्लुएंस उनके ऊपर इतना ज़्यादा होता है कि खुद का जो है, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू वो रखना ही नहीं चाहते, बस उनके साथ ही वो अग्री कर लेते हैं, भले ही वो सही हो या गलत हो. उन्हें दिल से लग रहा है कि नो दिस इज़ रॉन्ग, बट दे डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस टू से नो यू आर रॉन्ग, एंड दे जस्ट गो विद देम. So easily influenced by the peers, overreacting to the things and situations, and always putting them down, always putting oneself down. So, we have seen the people with high self-esteem, what do they have? We have seen the low self-esteem. Now, I am welcoming you to know wonderful me. आप खुद को समझिए, खुद को जानिए, and be very sure that you are wonderful. So, I am inviting you, you are invited for wonderful me. Let's see how wonderful you are. Now these are the 5 feelings that nurture the high self-esteem. If you want to be wonderful, if you want to have a high self-esteem, how you should have? The 5 feelings, basic. Nurture these 5 feelings, and this ultimately will nurture the self-high esteem in you. The first one, the sense of security, a feeling of trust or safety. Always have that feeling in you. Always nurture the feeling of security. Yes, I trust myself. I'm safe. I'm safe with my parents, with my family, with my neighbors, with my friends, in the campus of my college, anywhere. And I trust all the people around me. And the same will be reciprocated. आपके आजू बाजू जो लोग हैं वो भी यही ट्रस्ट जो है वो रेसिप्रोकेट करेंगे. एंड द फर्स्ट सेंस ऑफ सिक्योरिटी, इट नर्चर्स सेल्फ एस्टीम. सेकेंड, सेल्फहुड, सेंस ऑफ सेल्फहुड, नोइंग हु यू रियली आर. हमें अपनी अच्छाइयाँ भी पता होनी चाहिए, हमें अपनी बुराइयाँ भी पता होनी चाहिए, पॉजिटिव हमारे इसमें क्या है, नेगेटिव क्या है, हमारे पैशंस क्या है, हमारे टैलेंट्स क्या है, ये हमें खुद को पता होना चाहिए. वी शुड आइडेंटिफाई आवर स्ट्रेंथ्स, आवर वीकनेसेस, आवर पैशन, आवर हॉबीज, एंड डेफिनेटली द वे वी फील गुड. सो अ सेंस ऑफ सेल्फहुड, knowing who you really are. A sense of affiliation, a sense of belonging. If you have that sense of affiliation, sense of belonging, definitely your self-esteem will rise. It will go up. Yes, you belong to this community. You belong to your family. You belong to your friends. This college, this department belongs to you. Affiliation, a sense of affiliation. You feel good. You feel, you can say you feel so confident. A sense of mission. A feeling of purpose, direction, and responsibility. Now you are not a small child, so you should have the purpose of your life, the direction, a goal, and definitely the responsibility of attaining those goals. So a sense of mission and a sense of competence, which is very important. Feeling like you are capable and successful in doing the things you are doing. That is a sense of competence, a sense of feeling that yes, I'm capable of doing the things and I will do it successfully. And all these things together, all these 5 feelings nurtures the self-esteem. So build your self-esteem. How? Let's see. So I'm going to give you the 8 practical tips to boost the self-esteem. Let's see if my mouse is running. Okay.
Fine. So these are the 8 tips which I am giving to you. Listen very carefully. The first one, positive self-talk. Don't be a victim of negative self-talk. Remember, you are listening. जब भी हम बोलते हैं, हम खुद को भी सुन रहे हैं ना. सो डोंट बी अ विक्टिम ऑफ नेगेटिव सेल्फ टॉक. कभी भी खुद को क्रिटिसाइज मत करो. हाँ, जब आपकी गलती है उसे एक्सेप्ट ज़रूर करो, पर जब आपकी गलती नहीं है तो आप बिना वजह खुद को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे. पॉजिटिव सेल्फ टॉक, राइट. सेकेंड, सेल्फ एक्सेप्टेंस. टू बी ब्यूटिफुल मीन्स टू बी योर सेल्फ. You are the best version of yourself. So it's not that that particular person is beautiful. All celebrities are beautiful. Yes, they are. But we are we and they are they. Right? You are you. So to be beautiful means to be yourself. You don't need to be accepted by others. आप जैसे हैं, अगर लोग आपको वैसे accept कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. And you need to be, first thing, you need to accept yourself the way you are. And always think of getting a better version of yourself. I'm not saying कि आज हम जैसे हैं हम अगले 10 साल 20 साल वैसे ही रहें, बस वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट कर लें. No. Always try on improving yourself. Be the best version of yourself every single day. Positive thinking. Positive thinking will let you do everything better than the negative thinking will. If you are optimistic, if you have a positive thinking attitude, definitely, ज़रूरी नहीं है हर बार हमें सक्सेस मिले, पर हम नेगेटिव थिंकिंग से तो बच सकते हैं. और उससे हमेशा जब हम पॉजिटिविटी लेके आगे बढ़ेंगे तो हमारे रिजल्ट्स बेटर होंगे. I'm not saying every time you will be a winner. That's not possible. But yes, you will always step forward as compared to the negative thinking. Self-motivation सबसे important है. People can boost their ability to solve problems under the pressure by using their self-affirmation. Yes, I can do it. I should do it. मुझे ये करना है, मैं ये करूँगी या मैं ये करूँगा. कुछ भी हो जाए, I have to do that. So that self-motivation has to be there. आपके पेरेंट्स आपको नैक कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपके टीचर्स कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे, you cannot boost your self-esteem. So self-motivation is again very important. Creative visualization. If you really want to reach a goal, you must see the reaching in your own mind before actually being there at your goal. You should have a very creative visualization of what you are doing. और आपको हमेशा you have to train your mind likewise कि yes, I'm going to crack this, I'm going to achieve this, I'm going to reach over there, I'm going to achieve my goal. And definitely you will be there. Success celebrations. Whenever छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे सक्सेस होते हैं, celebrate that. Be proud of yourself at every step. आज मार्क्स इतने मिले, celebrate yourself. If you made a new friendship, celebrate yourself. If you have helped your parents some way or other, or your friends, celebrate yourself. Because you are the one, you are the first one who is going to celebrate you, not others. Persistence. Ambition is a path to success and persistence is a vehicle you arrive in. Be persistent in your actions. हमेशा याद रखना, persistence जो है वो हमें अपने गोल तक के ले जाने में, हमारे ambition तक के पहुंचने में हमेशा मददगार होता है. सबसे बड़ा vehicle, सबसे helpful जो एक क्वालिटी है वो है persistence. Self comparison. The only person you should try to be better than who is you were yesterday. आप जो कल थे उससे बेहतर बने. खुद को खुद से कंपेयर करें, खुद को कभी दूसरे से कंपेयर ना करें. Self comparison is best comparison. I told you earlier also, be better version, be the best version of yourself what you were yesterday. आज आप में कुछ
अच्छी चीज़ें और ऐड कीजिए, कल और ऐड कीजिए. इस तरह से द जर्नी मस्ट गो ऑन. इट शुड नॉट stop at any point of time. So here are the few steps you can take to improve your self-esteem. First is forgive your past mistakes. हम सबका एक पास्ट होता है, हम सब ने गलतियाँ की है. हो सकता है कुछ गलतियाँ बहुत बड़ी हमसे हुई हैं, बट ट्राई टू फॉरगिव योरसेल्फ फॉर दोज मिस्टेक्स. उन मिस्टेक्स को लेके, उस गिल्ट को लेके कभी भी आगे मत बढ़ो. उसे अपने आप को माफ़ करो उसके लिए. सेकेंड, focus on the positive attributes. There are so many positive things around you. There is so much of talent inside you. Try to use that talent. Try to identify the passions, your hobbies. Try to set a goal and focus positively. Follow the example of successful people. I told you, we are not going to be influenced by the media or the celebrities. But that does not mean that I don't have a role model. I should not have a role model. Definitely, you should have a role model if you want to. So follow the example of successful people. वो कहीं से भी हो सकते हैं. वो हो सकता है फिल्म इंडस्ट्री से हो, वो किसी इंडस्ट्री को, दूसरे इंडस्ट्री को बिलोंग करे, सेक्टर को बिलोंग करे, बहुत अच्छा राइटर हो, पॉलिटिशियन हो सकता है आपके टीचर हो, या आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं आपका रोल मॉडल, आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं रोल मॉडल. बिकम अ सेल्फ टॉकर. खुद से बात करने की आदत डालो. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बड़बड़ाओ, नो, जस्ट गिव सम टाइम टू योरसेल्फ. खुद के लिए कुछ समय खुद के लिए निकालें एंड बिकम अ सेल्फ टॉकर. वॉट एवर आई हैव डन थ्रू आउट द डे, वॉज इट गुड? क्या मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया? गलत किया तो क्यों किया? सो दैट इज समथिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ टॉकर. गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट एंड रिचार्ज योरसेल्फ. हमेशा हमें, वी आर ह्यूमंस, वी आर लाइक मशीन्स, बट मशीन डू नीड रेस्ट. सो गिव रेस्ट टू योर माइंड, गिव रेस्ट टू योर बॉडी एंड गेट रिचार्ज्ड. मेक योर वर्क एंड स्टडी स्किल योर ओन. आप जिस भी फील्ड में पढ़ रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, मास्टर दैट. स्किल्स जो हैं आपके पास, उन्हें आप यूज़ कीजिए, आप अपस्किल कीजिए अपने आप को. सो मेक योर वर्क एंड योर स्टडी स्किल योर ओन. Practice your talents. You are so talented as a person, as an individual. So practice your talents. Fit yourself physically. If you are not physically fit, definitely everything will be very lethargic. So physical, आपको बहुत ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, अपने सेहत का, and you need to be physically fit. When you are physically fit, definitely your mind and body gives you a positive signal, and you move one step again ahead towards the self-confidence. Learn new things. इतनी नई नई चीज़ें आती हैं, टेक्नोलॉजी है, स्किल्स हैं, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स हैं. सो ट्राई टू लर्न द न्यू थिंग्स, डेफिनेटली डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट. इम्प्रूव योर पर्सनल रिलेशनशिप्स with your family, with your friends, with your neighbors, with your teachers. Try to be very polite, humble and helping. And always dress well. Dress well का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि हम रोज़ नए कपड़े पहने, रोज़ हम सेलिब्रिटी वाले कपड़े पहने, महंगे महंगे कपड़े पहने. नो. ड्रेस वेल का मतलब होता है you need to be very comfortable in whatever you are wearing, and you are very comfortable carrying yourself. Be neat, clean, tidy and smart in your lookout. That is dress well. And one thing which is very important, keep a smile on your face. That will bring the self-esteem and the confidence to a newer level. First thing, self-esteem comes from every experience of your life. Definitely. Whatever experience you have in your life, the good, the bad, whatever, through so vast background, वो experience आपका हो सकता है personal experience हो सकता है वो experience एक community experience हो,
but self-esteem comes from each and every experiences of your life. Second, how you view yourself affect everything you do in your life. What you think about yourself, whether you think about yourself positively, negatively, or you take yourself as a failure, or you keep on criticizing yourself, all this is going to affect you and your self-esteem. High self-esteem gives you good feeling about yourself. Yes, when I am high on my self-esteem, I really feel good. I really feel confident about myself. Low self-esteem distorts your view of yourself. I'm not good in this. I cannot do this. People will laugh at me. What if I don't agree with that person? Oh, I cannot do this because surrounding is so bad. People are so bad. The system is worst. We keep on blaming, and definitely that is going to hamper us. That is going to give a negative signs for ourselves. Self-esteem definitely can be improved. It is not that कि हमारे पास हम आज जिस स्टेज पे खड़े हैं हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को लेकर हम वहीं पे हमेशा रहेंगे. No. Therefore, all these things for you guys. Self-esteem can be improved anytime. And I think you should always help your friends. You should always help your family members, your neighbors, the people around you to elevate the self-esteem. And in the process, you will see your self-esteem has always also on the higher level. So self-esteem can definitely be improved every time with the efforts which you are taking for yourself. I'm not saying efforts which others are taking for yourself. No, not at all. These efforts you need to take for yourself. You need to be the priority of yourself. You have to be your priority first. How to cultivate healthy self-esteem for a very happy life? Learn how to accept a compliment. If someone is giving you the compliment, accept it with open arms. Oh, thank you so very much. I am humbled. Oh, thank you. So learn to accept a compliment. Never give a question mark. Oh, really? Was I that good? This shows that you are not confident about yourself. You are low on your self-esteem. So learn the first thing to accept a compliment. That yes, if someone is saying you are good, that means yes, you are good. और अब हम इतने समझदार तो हो ही चुके हैं कि कोई अगर हमारी झूठी तारीफ करे तो वो हम समझ सकते हैं, है ना? एंड स्टार्ट अ ग्रैटिट्यूड जर्नल. ये मैं सब पार्टिसिपेंट्स को हमेशा बताती हूँ जब कभी भी सेल्फ एस्टीम पे कोई मैं सेशन लेती हूँ कि आप हमेशा एक अपने पास एक डायरी रखें. स्टार्ट राइटिंग. ये जो हैबिट है ना सेल्फ एस्टीम वाला जो हमें कल्टिवेट करना है, हमें हाई लेवल पे जाना है, हमें कॉन्फिडेंट हमेशा रहना है, इसके लिए सबसे अच्छी शुरुआत जो होती है कीप अ ग्रैटिट्यूड जर्नल. आज हमने दिन भर में ये किया एंड आई एम रियली थैंकफुल टू फर्स्ट. सबसे पहले तो मैं खुद को थैंक यू बोलूँगी. Yes, I'm thankful to me that I took some efforts to study, to understand, to help other person. मे बी मैंने अपने फ्रेंड को हेल्प किया, उसको ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ रहा था, सो आई हेल्प्ड हर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक. आई डिड दिस, आई डिड दैट. दैट इज़ अ ग्रैटिट्यूड जर्नल. और वो दिन भर में आप देखेंगे व्हाट ऑल गुड यू हैव डन. गलतियाँ भी लिखें पर अच्छे काम जो किए हैं उसे अच्छे से रिकग्नाइज करके अपने पीठ पे शाबाशी दें. सो स्टार्ट अ ग्रैटिट्यूड जर्नल. सेकेंड, थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ फ्रेंड. हम पहले खुद से दोस्ती करें और बाद में हम दूसरों से दोस्ती करें. पहले हम खुद को पहचानें, व्हाट आई एम. सो फर्स्ट बी फ्रेंड विथ योर सेल्फ. हम अपने अच्छे दोस्त बने पहले और डेफिनेटली अल्टीमेटली हम बाकी सबके बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे. सो हमें इस पॉइंट से वहाँ तक के जाना है ना? हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट तक के जाना है. लव योरसेल्फ.
last but not the least, the way you are, the way you look, the color of your skin, your personality, the way you present has to be good, your manners has to be good, but definitely you need to accept yourself as you are. And every day try to improvise. Try to add something to your personality. Try to move a step ahead of what you are here today. एक कदम रोज आगे बढ़ाएं. So, learn how to accept a compliment, start a gratitude journal, think about yourself as a friend, and love yourself. So the final thoughts, you are a unique individual. As I told you on the very first slide, that each and every one of us are unique. We all are unique. No one else is like you in the whole world. हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं है पूरी दुनिया में. हम अच्छे हैं, बुरे हैं, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, पर हम यूनिक हैं और हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं है. एंड दिस यूनिकनेस मेक्स यू स्पेशल. ये जो यूनिकनेस है आपका, ये ऑलरेडी आपको स्पेशल बना चुका है. सो येस, यू आर स्पेशल. आई एम स्पेशल. And our time in this world is definitely limited. And this pandemic has taught us so many things. So our time in the world is limited. Make it happen for you so you leave your mark in this world. So start working on your self-esteem. Have whatever points, whatever tips I have given you. And love yourself, and the rest definitely will follow. First, you need to love yourself, and everything will follow. And that is you can say, the mantra of self-esteem. This is something which we all should do. Love yourself first, and everything will definitely going to follow. Please read this. You, yes, you. You are the one reading this. You are so beautiful. I will add smart. You are beautiful, you are smart, you are talented, you are amazing, and simply the best, being you. So never ever forget that. So whosoever is reading this should read it like, you, yes, you. You are beautiful, very smart, talented, amazing, and simply the best at being you yourself. And you need not forget this. So with this, I'm ending up today's session on self-esteem. Thank you so very much. Good day.